नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा। स्वागत है आपका इंडिया सागा पे। माँ, क्या माँ का कोई दिन सेलिब्रेट करना, क्या एक दिन हैप्पी मदर्स डे बोल देना काफी है? माँ एक शब्द नहीं, खुद में एक जज्बात है। इसी बार इंडिया सागा 2022 में मदर्स डे को सेलिब्रेट करने उन तमाम माँओं को सेलिब्रेट कर रहा है, उन तमाम माँओं को सलाम कर रहा है जो सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि देश दुनिया में भी अपना पूरा सिक्का जमा रही हैं। अपनी माँ को रोल को बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और शायद इन तमाम चीज़ों पे हमारे साथ चर्चा करेंगी कि क्या उन्होंने जिंदगी में जो अचीव करने की कोशिश की, जो सपना देखा, वो कितना मुश्किल था। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते हैं, सबसे आपको मिलाते हैं मिस डॉक्टर पूजा मल्होत्रा। नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार। फाउंडर है पावर सूत्रा की, नाम में ही पावर है। हमारे साथ जुड़ी है मिस शीतल सोनावानी जो फाउंडर है और जो एक आर्टिस्ट है जिन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप। तीसरी जो पैनलिस्ट मौजूद है मिस रुचि गर्ग जो सीईओ है वेन्यू लुक की। तो काफी नमस्कार मैम। कहते हैं कि बाहर का भागदौड़ का कार्यभार एक माँ कैसे संभाल पाएगी, लेकिन वेन्यू लुक जिनकी फाउंडर है मिस रुचि गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है। मिस मेधा मखीजा, फाउंडर ऑफ ब्लू टिक पीआर। नमस्ते मैम। ब्लू टी शर्ट में भी हैं आप। यस। अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल। हमारे साथ मिस मीनल अरोड़ा जो डायरेक्टर हैं स्टेमफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स की। नमस्कार मैम। पीछे अपने स्कूल का बैनर लेके बैठी। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका इंडिया सागा पे। तो सबसे पहले मदर्स डे पे आप सब से कुछ जानना चाहूंगी मैम। मिस पूजा मल्होत्रा मैम, पावर सूत्रा, द पावर ऑफ वुमेन। आप बताइए, क्या मदर्स डे क्या मायने रखता है आपकी जिंदगी में? मदर्स डे मेरे हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन एवरीबॉडीज लाइफ। एवरीबॉडी, all of us here are moms and we all have moms, right? So Right. definitely it's a very important day in everybody's life. It reminds us that, it reminds us about that great woman who has given us birth, who brought us to this world, जो हमें इस दुनिया में लेके आई है। और होपफुली हमारे बच्चों को भी ये वो दिन याद दिलाता है कि हाँ, आज माँ को थोड़ा थैंक यू करना बनता है। लेकिन सबकी जिंदगी में माओ का बहुत अहम रोल है कि जहां आप एक स्कूल की डायरेक्टर हैं, जहां पे आपके साथ कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जिनकी देखरेख आपको देखनी है, ये कितना बड़ा टास्क है। And thank Indian Saga for inviting all the mom entrepreneurs. कि मुझे लग रहा है आज ये जो हम सब इकट्ठे आए हैं तो it will lead to a very fruitful discussion. And मेरा perspective आपने सही कहा that I am on both sides. I am a mother of a 15-year-old child. I'm an educationist. I'm an entrepreneur. But I'm also someone who's responsible for laying down the foundation of lakhs and lakhs of children, the children of the mothers who are sitting here. हम स्कूल जाया करते थे। आई थिंक जब हम सब स्कूल गए हैं, आप सब जब स्कूल जाते थे तो हम सबके इनिशियल क्लासेस में मेनली जो टीचर्स होते थे वो वुमेन्स ही होते थे, मैम ही होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी पता है कि एक औरत ही है या फिर एक माँ ही है जो शायद जितने क्लासरूम में अगर 30 स्टूडेंट्स भी हैं उन सबको एक माँ की नजर से ही देखेगी और उसी तरीके से उनको संभालेगी। शायद यही एक रीजन है कि प्ले स्कूल में मेनली जितनी भी टीचर्स होते हैं वो एक वुमेन है और शायद दिस इज द पावर ऑफ 100% women are teachers in play school और senior school में 90% women है। 10% comes to middle schools, chemistry teacher वगैरह थोड़े experts होते हैं male, sports teacher and all, but mostly you are right. You spotted it very well. कि वो जो mother-like quality होती है ना एक औरत में, that comes to use. Let's talk to Miss रुचि गर्ग। आपके तो क्या कहने, वेन्यू लुक, राइट? आप इट्स अ काइंड ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, राइट? तो कितना मुश्किल रहा होगा एक वेन्यू से दूसरी वेन्यू जाना और बीइंग अ मदर इनिशियल स्टेज में कैसे खड़ा किया एक वेन्यू लुक को? The platform, the Venue Look platform, is about profiling all possible event spaces for all possible occasions that can be planned. अपनी weaknesses सबको पता होती है, awareness होनी चाहिए,
but strengths के लिए awareness ज़्यादा होनी चाहिए, so that you can play around your strengths and you can build things upon based on your strengths. So challenging था actually, because 7 years की job के बाद I took a break of about 5 years from job, because I had 2 small kids at home and I wanted to bring them up myself in their early years especially. So I took a sabbatical of about 5 years, and then that love for technology again kicked in, and I thought, I have to come back and build something from scratch, which was a childhood dream. So everything. Sorry to Yeah. interrupt, ma'am. आपने जैसे कहा कि जैसे आपके जो बच्चे थे और आपने सोचा कि आप 2 साल का गैप ले लें because you want to raise your children by yourself, और then you started, आपने सोचा कि now it's time to come back, right, in the market. Yeah. So is it it was difficult at that time because एक second inning के लिए कभी भी किसी woman को लोग एक question मार्क नहीं देते, तो यही क्या रीजन था कि आपने जॉब नहीं लिया और आपने खुद का अपना प्लेटफॉर्म बनाया? जॉब के लिए भी थोड़ा सा ट्राई किया था, बट डिडंट गेट वेरी गुड ऑफर्स, एंड पैरेलली आई वाज वर्किंग ऑन दिस आइडिया व्हिच वाज ऑलवेज एट द बैक ऑफ द माइंड कि एक दिन ये करना है, कुछ स्क्रैच से प्लेटफॉर्म बनाना है टू इम्पैक्ट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल इन अ गुड वे, इन अ हैप्पी वे. सो जब आइडिया थोड़ा थोड़ा रिफाइन होना शुरू हुआ विद ब्रेनस्टॉर्मिंग विद फैमिली, तो लगा कि हाँ यही करना है. एंड इतना आसान नहीं था. Early years are always difficult, and then things start to fall in place. That's why we call it her first step. हमारी शो का इसलिए हमने नाम रखा है her first step. So why you choose PR? Why you choose PR? So I actually started my career with television, and that was of course in my early 20s, so it was very easy for me to do. Sorry to interrupt, but आप माँ की तरह दिखती हो. You are quite young. Thank you so much. Thank you. I have 2 children, 3 and 6. Okay, nice. So I chose PR mainly. I had studied mass communication, and then I went on to work with Times Now, the TV channel. And after doing that for 2 years, I realized that that is not a very sustainable sort of lifestyle. Because in television, I'm sure you're aware, मतलब आज बहुत लंबे रहते हैं और सब कुछ कोई रूटीन नहीं होता है. So that's why I switched to PR, and now of course it's been 12-13 years in PR. And yeah, now I'm working with different sort of digital entrepreneurs, digital businesses to promote them, because times have changed a lot. क्या आपने जब छोड़ा, जब टीवी एडवर्टाइजमेंट का जो आपने पार्ट छोड़ा, क्या रीजन इसके पीछे मदरहुड थी या शादी, क्योंकि लेट नाइट आपको काम नहीं करना था, या ये योरसेल्फ यू डोंट लाइक? एक्चुअली उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, पर ओवरऑल मेरे को लग रहा था कि ये आगे जाके मैं परस्यू नहीं कर पाऊंगी ज्यादा देर तक. ओके, सो जैसा मैं पूछ रही थी आपसे, एक आर्टिस्ट बहुत उसकी जितनी भी वो आंख बंद करके जब सोचता है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो पेंटर है, जो सोचता है या फिर जो उसके अंदर चल रहा है, शायद वो उसी को पेंट करता है. तो बीइंग अ मदर, जो एक थिंकिंग होती है, जो क्रिएटिविटी पावर होती है, वो बाकियों से और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने ही लिए नहीं सोच रहे होते, उस टाइम आप अपने पूरे परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए सोच रहे होते. आपने क्या डिफरेंस, शादी के पहले भी आप पेंटिंग करती थी? Good afternoon to the all panel member who are here, and I wish you all a very happy Mother's Day. Basically, I'm an architect, but with Kimaya, me as a mother of one of the youngest author of 2 books, always feel satisfied and proud. She is my inspiration, and her trust in me always boosts me to prove myself to the next level. And the more she has become her own little person, the more I'm getting inspired at my workplace also, and in my architectural work also. I think आपकी भी बेटी ऐसी है, she's trying to copy yourself, and that's why she's so successful in age of 9, and it's really congratulations to you. Thank you. तो आपको क्या लगता है कि आजकल के टाइम में जो सुपर मॉम है, जो सुपर वुमेन है, सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है, और क्या ये सच में आपको मैटर भी करता है कि सोसाइटी क्या सोचती है? मिस पूजा मैम. सोसाइटी डेफिनेटली ये सोचती है कि हर मॉम जो स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है, वो एक सुपर वुमेन है, राइट? ये प्रेशर रहता है कि दे वांट अस टू एक्सेल इन एवरी फील्ड,
Like we should not compromise our family. Of course, Yeah. we don't do that, right? And we should not be compromised at our work because of our family. That is the expectation, which society expects from us. But True. I think instead of that, the notion should be that it should be a balanced woman rather than a superwoman. Why there's a pressure of superwoman? Why? Right? It should be a balanced woman who is trying to strike a balance between her work and her personal and her public life, right? A professional and a personal life. So that is what I think that society should look at a woman. Rather than being a superwoman, it should be a balanced woman. Balanced woman. True. And I don't know you are superwoman or every woman is superwoman or not, but I can assure you that every woman is supermom, and I can bet over that. About some like what are our views towards society seeing a woman as a superwoman. So yeah, I would like to put up my views. Like I got introduced to this term superwoman in my life a few years back during the delivery of my baby at USA, at America. I had normal delivery without even an epidural injection or any painkiller substitute, and I delivered baby in 14 hours. So when all the procedure is done and I had baby in my hand, all nurses from that hospital came to see me and see my daughter. So what I feel is instead of focusing on being a superwoman, focus on being overflowing with happiness in the smallest thing that one woman is doing. I mean, whatever it is, even if it's a small thing, you should be overflowing with the happiness. This is what I feel instead of being a superwoman. मिस मेधा, एक छोटा सा सवाल आपसे, What you love most? अगर एक मॉम एंटरप्रेन्योर हो कि आपको कौन सा पार्ट से सबसे ज्यादा प्यार है एक मॉम एंटरप्रेन्योर से? एंटरप्रेन्योर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मॉम एंटरप्रेन्योर बनने से का मोस्ट लविंग पार्ट क्या है आपको? मॉम एंटरप्रेन्योर होने का मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो है for me it's about having an identity outside the house, I mean जो घर पे हम लोग करते हैं वो तो करते ही है, पर उसके बाहर जो हम लोग दुनिया देखते हैं जहाँ पे अपनी ड्रीम सिर्फ अपनी होती है, वो पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है. ऑल्सो बच्चों के लिए आई फील एक अच्छा रोल मॉडल बनना है. तो जब हम जाके काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर मॉम अपना बिजनेस कर रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मॉम कुछ भी कर सकती है डैड के जैसे, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, एक क्वालिटी. और यही मैं चाहूंगी कि हमारे बच्चे भी देखें, मतलब सन एंड डॉटर बोथ ये समझे कि women are supposed to work and men are as much responsible for the house as much as women. So let's like this so interesting to talking to all of you. Let's start a rapid fire round. So मैं एक सवाल करूंगी. We'll start with Ruchi. So we'll start it like this, and this is a rapid fire round, so you don't allowed to think a little, like you're not allowed to think it. You just have to speak whatever you thought first, right? So let's start with Ruchi. And आराम करने के लिए आप क्या करते हैं? So to relax, I either resort to reading or watching TV. Okay, second for Medha. So this is rapid, so you're not allowed to think. कोई entrepreneur जो आपको प्रेरित करती है? Yeah. Woman entrepreneur who I look up to would be Indra Nooyi, the CEO of PepsiCo, the former chairman of PepsiCo. In India, I find the story of Falguni Nair very inspiring. Nykaa CEO. Yeah, those are the two. Okay, so like, what is the best part of her जो आपको inspire करता है? For Falguni, I think the age at which she has gone ahead and she's created such a big company, I think that's very, very inspiring. Like to think I also inspired her a lot. So the second question for Miss Meenal. हर इंसान की जिंदगी में एक टाइम आता है जिसमें आपको लगता है कि बस हो गया, अब माँ चाहिए मुझे. So what like incident of your life? I said I'm post my 40s. I'm around 43. But आज की एज में भी जब मेरे को I get stuck somewhere, the first call I make is to my mom.
इतना बड़ा सपोर्टर और फैन फॉलोइंग होती है ना घर पे, जब आपकी मदर का जो सपोर्ट होता है ना, उसके बगैर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू दैट वी आर टुगेदर एज women, part of this panel discussion talking about what women can achieve. But let me tell you, it cannot be achieved without the support of the family members. बट कहीं आप सोचो, अगर घर पे आपके पास हेल्प नहीं है, आपको ही खाना बनाना है, आप ही को घर का झाड़ू पूजा करना है, आप ही को कपड़े धोने हैं, आप ही को प्रेस करने हैं, फिर आप ही ने सब कुछ करना है, मतलब बच्चे का भी देखना है, एवरीथिंग, और फिर आपने जाके मॉर्निंग में जाके इवेंट भी ऑर्गेनाइज करना है, ऑफिस जाके काम भी करना है. इट्स नॉट पॉसिबल. So I would like to take this opportunity and thank all the support system that we have in our homes, whether it's our mother, whether it's our in-laws, whether it's our parents, who have given us an ecosystem. Yeah, हमारा घर का support staff. True. Sheetal, I would like to this rapid fire round, so I ask you a small question. छोटा सा सवाल है मेरा. अभी एक कुछ नई चीजें आई है, जैसे प्रियंका चोपड़ा, राइट? शी वाज मिस वर्ल्ड और नाउ शी इज मदर एज वेल, राइट? बट डिफरेंस ये है कि उन्होंने सरोगेटरी के थ्रू उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, राइट? काफी सारा उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, आपने देखा होगा. काफी ट्रोल हुई थी प्रियंका चोपड़ा जब वो सरोगेटरी मदर बनी थी, और जब वो कोई वुमेन्स जो बच्चों को गोद भी लेती है, तो कई सारे लोग बातें करते हैं कि उनके अपने बीच में. तो उस पर आप क्या कहोगे? क्या मदरहुड में इसका कोई असर पड़ता है कि वो आपका बच्चा है, या आपने गोद लिया है, या सरोगेटरी के थ्रू हुआ है, या आपने खुद उसको जन्म दिया है? See, there are two aspects of it. It depends on, like, for me, it was like I wanted to know the pain through which a baby get born. So that's why I wanted to have a natural delivery kind of. So it's individual's perspective up to this is very different. Like if you talk about Priyanka Chopra, she has her career which needs her body to be highlighted, or her aim is different in her life. Yes, she also loves her child the same way I do, but it depends on the perspective what you carry. That is what I feel. But yes, each mother loves her child a lot, the way I do, or the way everybody else in the panel do. Okay, so it's a platform and it's a day. Like you are mother, so I think आप सबको आपके बच्चे और सब जो भी आप सबको प्यार करते हैं, wish you happy Mother's Day. So I write something by India Saga's team side. So just listen it and say me, like I think आप सब कहीं ना कहीं, हम सबके दिल में ये जज्बात होते हैं, लेकिन हम उसको बयान नहीं कर पाते अपनी माँ. So मैं बिंदी अपने माथे के बीच लगाती हूँ, ठीक है? ऐसे मैं बिंदी अपने माथे के बीच लगाती हूँ, ऐसे ही लगाती है वो, ये सोचकर मैं चुन्नी सलवार ओढ़ कभी ऑफिस चली जाती हूँ. मेरे सपनों पर कोई सवाल कैसे उठा पाएगा, मुझे श्रृंगार ही नहीं हौसला भी मिला है मेरी माँ से, जिसके सामने खुदा भी झुक जाएगा. So I think you all are very successful women in your own life. You are very good mother as well, and I think you raised by a very good mother. And आप सबको वो हौसला मिला है, तभी आप लोगों ने कुछ शुरू किया है. शुरू करने के लिए काबिलियत चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है, जो I think आप सब में है. And एक जो कुछ सवाल होते हैं जो हमेशा सोसाइटी उठाती है माओ के ऊपर. So a small thing on this कि उससे मत बताना कि आगे कैसे जाते हैं. उसे मत बताना कि आगे कैसे जाते हैं, संभाल पाएगी क्या वो घर और नौकरी एक साथ. ये बातें हर बार उससे ही क्यों पूछे जाते हैं. एक जगह से दूसरी ओर वो गाड़ी कहाँ चला पाएगी. अरे मैं बताता हूँ, वो एंटरप्रेन्योर, ट्रैवलर, पायलट या इन्फ्लुएंसर कैसे बन पाएगी. तुम्हें जिसने जीवन मिला उससे तुम क्या बताते हो. 308 हड्डियों के एक बार टूटने का दर्द सहा है उसने, जीवन का शैली तुम जिसे सिखाते हो. So I think this is for whole society जो जज करता है किसी वुमेन को कि if she is able to do it, if she able to do that. So if she is able to raise a children, so she can do anything. She can turn the world by herself only, and I think वो हो रहा है, and we can clearly see this. So by ending this, her first step, I would like to ask, what is your first step
Let's start with the Meenal. What's your first step to being an entrepreneur, to being a mother? Yeah, right. See, I was at home for 6 to 8 months, and after the delivery of my son, and my first step was when he was growing up, because I was working in a school. My office was in a school setup. I used to take my son along with me to the school, in the environment, and balance my world around him, his needs, and जो extra time मिलता था जब वो सोता था, या when he was resting or playing, or when he did not need me, like he was not hungry and he was not cranky and he was settled, that was the time I was meeting my professional requirements. जो भी मेरी professional needs थी, या जो मुझे meetings करनी है, या मुझे कुछ documentation करनी है, approvals करने हैं, वो सब मैं उस time पे करती थी. So that I made sure कि मैं दोपहर का खाना अपने बच्चे के साथ खाऊंगी. And so when you start balancing your professional and your mom's life together, yes, that was your first step in your absolutely, that was my first. Yes. So I tried to create a system, एक environment मैंने बनाने की कोशिश करी जिसमें वो भी comfortable है और मैं भी comfortable है. और अब हम इतने comfortable है कि जब मैं जाती नहीं हूँ काम पे, because he is not well, he says मैं ठीक हूँ ना, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, आप जाओ. You go, I know that you have these meetings, and he sees कि 4 meetings हैं और मम्मा सब कुछ cancel कर रही है मेरे वजह से, then he will tell me कि आप जाओ, I am okay, I will take care of myself, and he gives me that push that वो मत करो नहीं तो सब कुछ आगे, it is like सब कुछ खराब हो जाएगी, next पूरी week खराब हो जाएगी, आपकी सारी meetings आगे पीछे हो जाएंगी. So now he understands कि एक working mother के challenge क्या है, and then he supports as a son because he's seen me balance. And he knows कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तो you go and take What's care of your your first step, Medha? My first step was to do something that involved working from home, because my children are both still quite young. My younger one is 3 years old, so I had to create something where I primarily work from home. So once in a while when I have meetings and all, I go out, but other than that, I work from home. So that is the first step for me and the most important aspect of so you choose to work from home, that you're work from home. Yeah, and I shut my home office door, but there's a lot of disturbance and all of that, but I can manage. Yeah, and this is the power of mom, I think. Ruchi, what is your first step? My first step in my second innings was to tell my kids that this is something I want to do, this is something I would love to do, but you will also have to support me in this decision of mine. And without your support, it will become very difficult for me to do these things that I want to do. And with their support, with their yes, mama, you should do it, and we will try to manage. So that was my first step towards this. What is your first step, Pooja? My first step is that whatever, even if I'm not with my child the whole day, because most of the time it is like that, I try and spend, the time after I get back home, I mean, with him only. And I will, if possible, I'll have dinner with him all the time. Every day I'll try to have dinner with him and I put him to sleep. That's a regular thing which I do, that I put him to sleep so that we have that short little sweet talk at the time of sleeping, that how was your day? What did you do during the day? क्या पढ़ाया आज स्कूल के अंदर, कैसा रहा? I listen to him only at that time. So that half an hour to 1 hour. So जो हमने इंडिया सागा ने हर फर्स्ट स्टेप जो नाम सोचा था, उसका कहीं ना कहीं रीजन था. एक रीजन ये था कि जिंदगी में हर बार जब हम कुछ नया करते हैं तो हमें अपना पहला कदम लेना पड़ता है. और उस टाइम हम, जैसे आप सबने कहा, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, सबने बताया कि फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है. आपने अपने बच्चे को अपने ऊपर चुना, आपने अपना पहला स्टेप लिया. हर कोई कुछ भी जिंदगी में करने से पहले अपना पहला स्टेप लेता है. So now you are the super mom of us, of our upcoming generation, and right now you are a super mom, and your children will be inspired by you, and in future your daughters will be they want to become like you, and they want to become a mother like you. That's the same part. What you want to suggest the whole audience of ours कि आपकी लाइफ में आपको अपना पहला स्टेप लेने से पहले क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपना पहला स्टेप ले लेना चाहिए?
So the question is कि क्या नहीं सोचना चाहिए अपना पहला स्टेप लेने से पहले? Could you please क्या clarify? बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वुमेन सोचती बहुत है. Okay, yes. तो बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती. You should believe in yourself. Just believe in yourself, you know, and you will be able to do it. So this is the right moment that I can say I got inspired by Rhonda Byrne's The Secret, which has taught only one thing. If you want to change the outer aspect of your life, you should change the inner attitude first, right? Believe in yourself, and then you will be able to do it. Until unless you will not believe, कुछ भी कर लो नहीं achieve कर पाओगे. That is what I can say, that you should always believe and don't think that you can't do it. Just do it. Yeah, great. Like 100% right. What I feel is stop looking at your work as a job. जब आप सोचना बंद करोगे कि ये मेरा जो काम है, ये मेरा job है, that particular time you start enjoying it. And secondly, most important thing for women is don't suppress your emotions. Try to express your emotions. Keep speaking to your friends, your loved one, your children, and express. You can express it through art also. You can express through any of your hobby. So these two main points I would like to highlight for each and every woman. Great, and this is really a great session with all of you. India Saga की तरफ से आप सबको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. And from me and from whole India Saga team for each and every part of us, मैं सबको, हमें जो भी देख रहा है और जो हमें नहीं भी देख रहा है, हमारे तमाम दुनिया की सारी माओ को सलाम, और आप सबको हैप्पी मदर्स डे. सब खुश रहिए. अगर आप हैं तो हम हैं, दुनिया है आपसे है. आपको अगर ये कहानी पसंद आई, आपको हर एक की कहानी इंस्पायर लगी, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी ये पूरी कहानी पढ़ सकते हैं. साथ में ही आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप अपनी माँ को क्या कहना चाहते हैं, आपके कोई जज्बात हैं, या आगे अपने आप को आप कुछ कहना चाहते हैं, तो हमें कमेंट के जरिए लिख के भेजिए. देखते रहिए इंडिया सागा. फिर मुलाकात होगी. जय हिंद.